Hello everyone. Good afternoon. Welcome to the session with Learn Fatafat. So let's continue chapter Surface Areas and Volumes. That is a chapter 13 for class 10 CBSE and subject is mathematics. So obviously this chapter is your term 2 portion ka chapter and इसमें today we will do the sums from exercise 13.2. Okay, so let's get started. And 13.2 exercise में न्यूमेरिकल्स हैं related to जो हमने पिछले सेशन में देखा था that was finding the volume of a combination of solids. ठीक है, तो इसके लिए so when you want to solve the questions of this exercise you must know the formulas for volumes of the different figures जो हमने पढ़े हैं. So I hope you know them. फिर भी एक बार और recap कर लेते हैं. So volume of a cuboid L into B into H. Volume of a cube is a cube if A is the side of the cube. Volume of a cylinder is pi r square h. Volume of a cone is 1 by 3 pi r square h. Volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. And अगर वो hemisphere है तो obviously the volume will be half of that of the sphere. So this is 2 by 3 pi r cube. So once you know the formulas for volumes, तो इसके बाद हम ये numericals कर लेते हैं start. अब you know the difference between the class 9 chapter and class 10 chapter. The difference is that class 10 के chapter में we are dealing with the combination of solids. Combination यानी कि maybe there is a combination of cylinder and cone या फिर cone and hemisphere. तो जो भी और आपको आपके सिलेबस में they will only give you combination of two solids, not more than two. Okay, तो अगर वॉल्यूम फाइंड करना है for a combination of solids, so it's very simple. You have to just add the volumes. अगर सिलेंडर और स्फीयर से बना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अगर हाफ सिलेंडर और स्फीयर से बना है तो हाफ सिलेंडर और स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करना है. That's how you will do the numericals here. Okay, तो yes हम sums देखते हैं कैसे करने हैं. I'll show you the question and then you realize how to do and how to use these formulas. So this is the first question from your exercise. तो इसमें दिया है देखो this is the combination of solids I told you. So this solid is in the shape of a cone. Cone is standing on a hemisphere. तो cone ऊपर होगा. This figure is not given to you in the textbook. ये figure आपको खुद ही समझना है. तो cone standing on a hemisphere है means cone will be the upper part and the lower part of this solid is in the shape of a hemisphere. Both of their radii are equal to 1 centimeter. तो ये जो है radius दोनों का 1 centimeter है. Whether it is cone or it is hemisphere. Okay. And the height of the cone is equal to its radius. तो अगर cone का radius 1 centimeter है, so they are telling us that the height of the cone will also be 1 centimeter. Okay, तो चलो these are the values given. So let us write. ये combination किसका है? एक cone है और एक है hemisphere. डेटा में क्या दिया है? रेडियस इज गिवन. दोनों का रेडियस कोन का एंड हेमिस्फीयर दोनों का सेम है. सो आई एम राइटिंग 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ द कोन इज गिवन. हेमिस्फीयर में तो हाइट की जरूरत होती नहीं है. हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस बोला है तो दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. यहाँ पे ये रिमेंबर दिस थिंग. दे वांट यू टू फाइंड द सॉलिड का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई. In terms of pi means what? कि आपको pi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी होगी in this numerical. You have to keep pi as pi only. Don't write it as 22.7 or don't write it as 3.14. Okay, so this becomes very easy actually.
ऐसे वाले न्यूमेरिकल जिसमें हमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, दोज आर कंपैरेटिवली इजियर. So what will be the volume of this solid? So volume of the solid will be equal to, volume is comparatively simpler compared to surface area के problems, क्योंकि इसमें हमें directly add करना होता है. Okay, कुछ भी इसमें complication नहीं है. Volume of the cone plus volume of the hemisphere. That's all. So I'm just writing hemi. So I hope you understand. So let us put the formulas. Formula so you must know to solve this. Okay. So what is the formula for volume of cone? 1/3 pi r square h. And what is the formula for volume of hemisphere? That is 2/3 pi r cube. अब क्या करेंगे इसमें, पाई को तो पाई रखना ही है, प्लस वी विल टेक कॉमन. रेडियस फॉर बोथ इज सेम, तो मैं r को भी कॉमन ले सकती हूँ. इफ द रेडियस इज डिफरेंट देन वी कैन नॉट टेक r कॉमन. ठीक है, तो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से? आई कैन टेक पाई कॉमन, r स्क्वायर कॉमन और अपॉन 3 ये भी कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, सो इफ आई टेक ऑल दीज कॉमन, व्हाट एम आई लेफ्ट विद? फर्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म में बच जाएगा h एंड सेकंड टर्म में बच जाएगा 2r. ठीक है, दिस आई एम शोइंग यू द सिंपल मेथड हाउ टू सॉल्व इट. तो अलग अलग दोनों फाइंड करके फिर ऐड करने के लिए यू डोंट नीड टू डू दैट. सो दिस विल बी इक्वल टू पाई r squared upon 3 into now height and radius तो equal ही है, तो this h is nothing but r. So r plus 2r तो मैं लिख देती हूँ 3r. ओके, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं अब. सो बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 को हम कर लेंगे कैंसिल एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज पाई इनटू r क्यूब, राइट? सो आई विल गेट पाई r क्यूब. पाई को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है बिकॉज आई हैव टू कीप इट इन टर्म्स ऑफ पाई. सो पाई इनटू रेडियस इज गिवन एज 1, तो 1 की क्यूब कितनी होती है? 1 क्यूब इज 1 ओनली. सो हियर द आंसर विल बी only pi. So volume of the solid is equal to pi, but you have to write the unit. Unit है यहाँ पे because centimeter में है सारे dimensions. So I'm going to write the unit as cubic centimeter. So that's my final answer here. Answer है pi. ठीक है? So this is the first question का answer. Is it clear? I hope it's clear. चलो, let's do the next one now. ये छोटा सा था, there was not much calculation also involved. Let's see the second one. Here also ये figure दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में. You have to yourself imagine and draw this one. Visualize करना है खुद. ठीक है, so question में बोला है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends. So see, this part is a cylinder and 2 cones attached at the 2 ends. ये है पहला पार्ट, ये कोन ऊपर और एक नीचे के एंड पे एक कोन है. So 2 कोन है, बीच में एक सिलेंडर है. By using a thin aluminium sheet, diameter of the model is given 3 centimeter. So यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 3 centimeter दिया है. Length is given as 12 centimeter. So let's write length. Length के लिए you have to be very careful. Length किसकी दी है 12 centimeter? पूरे मॉडल की लेंथ दी है 12 centimeter. Which means यहाँ से लेके टॉप टू बॉटम एकदम पूरे ये सारे वैल्यूज हम लिखेंगे. See this full part because it's given volume of the solid of this model. So this full is how much? 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, so I am going to write this part and this part. Okay, ये दोनों हैं 2 centimeter each because height of one cone is 2 centimeter. So ये ऊपर के कोन का 2 centimeter और नीचे के कोन का 2 centimeter. अगर हम ये माइनस कर देंगे फ्रॉम द टोटल ऑफ 12,
Then what will I get? I will get the height of this cylinder. Cylinder की height भी मुझे चाहिए ना, formula मुझे use करना है तो. So from this point to this point, what is my answer here? 12 minus 2 minus 2 means 12 minus 4. So this becomes 12 minus 4, 8. So height of the cylinder I have got 8 centimeter. Okay. So dimensions are all written here. I hope you understood all the dimensions. Find क्या करना है? Find the volume of the air contained in this model. Assume the outer and the inner dimensions are nearly same. So there is no question of any thickness here. ठीक है, तो ये देखो ये 8 है. So volume of the air in this model, so we have to directly do volume of cylinder plus volume of the two cones. Okay, that will give us the answer. Volume of the air in the model. So volume of the model find करना है. This will be equal to volume of the बीच में का जो cylindrical part है plus volume of the two cones जो ऊपर और नीचे है एक एक cone, that we have to add. Okay, so like formula लिख लेते हैं. Volume of the cylinder is equal to pi r square h and volume of two cones. So so I'm going to do 2 multiplied by volume of one cone is 1 by 3 pi r square h. Okay, and now let's do the calculation. We can take pi r square common. So what remains in the bracket? First term में बच जाएगा h. r कॉमन क्यों ले सकते हैं? क्योंकि सिलेंडर और कोन दोनों का रेडियस सेम है इन दिस मॉडल. ओके, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक इट एज कॉमन. अगर एक ऐसा मॉडल दिया होगा where this is the cone and this is the cylinder फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे कुछ, तो ऐसे टाइप के मॉडल में कोन और सिलेंडर का रेडियस सेम नहीं है. सो इन दैट केस यू कैन नॉट टेक r एज कॉमन, बट हियर वी कैन टेक इट कॉमन. ओके, या सो यहाँ पे इक्वल है तो मैं ले लूंगी कॉमन. 1 मिनट. यस, r स्क्वायर कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में बच गया h. सेकेंड टर्म आई एम लेफ्ट विथ 2 by 3 height. Okay, now we can, what we will do is do the substitutions and then answer find करते हैं. Let's do the calculation here. Pi we will substitute as 22.7. Radius square है, so what is the value of radius? Diameter दिया था मॉडल का 3 सेंटीमीटर, तो diameter अगर 3 है तो radius will be half of diameter, तो 3 by 2, 3 by 2 दो बार क्योंकि r square है, into and then height plus 2 by 3 times the height. Height is how much? ये जो first height है, okay, there's a difference now, so I'm going to write this differently. Actually height अलग है, तो एक को मैं capital H लिख देती हूँ और एक को small h, ताकि you don't add both of them. You know, this is a mistake students कर देते हैं, क्योंकि दोनों height हैं तो वो 1 plus 2 by 3 they will do and then the answer will be wrong because both the values of h are not equal. Capital H अगर मैं सिलेंडर के लिए लिख रही हूँ, so height of the cylinder is how much? ये हमने कैलकुलेट की है 8, एंड जो सेकेंड हाइट है ये है हाइट ऑफ द कोन. कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर. Okay, so this is the substitution. And now let's do the remaining calculation. 2 11s are 22. So 11 into 3 3s are 9 upon 7 2s are 14 multiplied by, ये 3s are 24, 24 plus 4, 28 upon 3. So how much will this give us? 14 1s are 14, 14 2s are 28, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So 11 into 6 and मेरा आंसर यहाँ पे आ गया है 66.
cubic centimeter. This is the final answer. ये है volume of this model. So I hope you got the answer. Same answer. Yes. Okay. 66 cubic centimeter. ये पूरा जो मॉडल बनाया है रेचल ने, ये है इसका वॉल्यूम सिलेंडर का, एक सिलेंडर जो बीच में है एंड आगे पीछे जो दो कोन्स है उसके अंदर 2 ends, उसका भी वॉल्यूम भी है वैलिड. Okay, so I hope this one is also clear. Second one, first one is done, second one is done, and now let us do the third. Okay, तो यहाँ पे ये वाला figure, this is given to you in the textbook, but this one is not given. This I have just enlarged one gulab jamun so that we can understand the dimensions given. So let's see question में क्या बोला है. Now this sum is a little lengthy. इसमें you will have to have a little patience to solve it and solve it with focus, and please do the calculations very carefully here. Okay, because वही है इसमें. Otherwise it's easy, but read the question properly and do it with patience. Okay, so let's do this. Let's start. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. एक gulab jamun में. So if I've drawn here this one gulab jamun, this has sugar syrup, how much? Up to 30% of its volume. So if I consider around this much, एक gulab jamun में around 30% of its volume is sugar syrup. Okay, find approximately how much syrup would be found. तो ये देखो, ये इसमें ये पूरा in this jar, this blue thing is full the syrup. ये पूरा सिरप है. तो पूछा है कि कितना सिरप होगा if this jar has 45 gulab jamuns. And what is the shape of the gulab jamun given here? कोई सिंपल वाला शेप नहीं दिया है. गुलाब जामुन का नॉर्मली स्फीयर you can consider, but they have not given you a sphere. यहाँ पे it's a little complicated. Combined shape, each shape like a cylinder with two hemispherical ends. So this is the shape of the gulab jamun. It is a sphere at two ends. Okay, hemisphere, sorry. So this part, ये देखो, ये left end वाला hemisphere and this is the right end वाला hemisphere. दो hemisphere हैं और बीच में है वो cylindrical portion. Okay, now length is given. अब be careful here, ये जो length दी है 5 centimeter, this length is of the whole gulab jamun. Cylinder की alone नहीं है. Means from here to here, this full length is given. How much is it? Let us mark it. From here to here, पूरा gulab jamun जो है उसकी length. So this is given as 5 centimeter. And diameter is given as 2.8. So from here to here, this diameter is given. Okay, ये पूरा है, measurement is 2.8 centimeter. ठीक है. So we have to find approximately how much syrup would be found here. That is the question. तो पहले तो we know कि सिरप कितना है. It is 30% of the volume of one gulab jamun. 30% of the volume of one gulab jamun. तो पहले we will find the volume of one gulab jamun. After that we will find 30% उसका, and third step में हमको multiply करना होगा उसको with 45, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है total. ठीक है. So there are 3 main steps involved in this numerical. So we will do stepwise. I'll show you the easiest possible method of calculation here. Okay. Chalo. So first I'm going to find volume of one gulab jamun. So for gulab jamun I'm just writing GJ. Okay. So volume of one gulab jamun will be equal to volume of ये जो cylinder है बीच में cylindrical part plus volume of the two hemispheres जो end में हैं, right? So when I add, I will get the volume of one gulab jamun. ठीक है. So equal to
Volume of cylinder is pi r square h. Volume of two hemispheres यानी के 2 into volume of one hemisphere, actually वो एक sphere ही हो जाएगा, 4/3 ही मिलेगा, pi r cube. So let's check here, radius दोनों का same है या नहीं. अगर same है तो we will take it as common term. ठीक है, तो r is same for both, we can see this portion, ये दोनों का same है, छोटा बड़ा नहीं है radius. So I am going to take pi r square. This I am going to take common. So pi r square common करने के बाद ब्रैकेट में what am I left with? Height plus second bracket में क्या आएगा? 4/3 r. Correct? Is this correct? Are you getting it? And now let's put the values. So pi r square बाद में substitute करते हैं, पहले ये bracket solve कर लेते हैं. Height. This h is height of the cylinder. Height of the cylinder is not pi centimeter. Please be careful here. Height of the cylinder will only be from here to here. ये जो मैंने pink part दिखाया है. Okay, तो ये pink part का कितना है? See this pink part. How much is the value of this? That will give us the height of the cylinder. तो ये फाइंड करने के लिए मुझे ये पार्ट माइनस करना होगा इसमें से. This one and this one. Means 2 बार रेडियस माइनस करना होगा दोनों हेमिस्फीयर्स का. Okay. Now this radius is how much? 2.8 का half, 1.4. And this is also 1.4. तो 5 में से minus 1.4 minus 1.4. That means 5 में से minus 2.8. Okay. So height of the cylinder, I'll just write here. It will give me 5 minus 2.8. That is 2.2 centimeter. ये pink part. This will be 2.2 centimeter. Okay. Is this clear? तो हाइट की जगह पे 2.2 लिख लेंगे प्लस 4/3 into radius. Radius is 1.4. Okay, now pi r square. When you solve this, ये 6.6 plus you will get 4 4s are 16, 4 1s are 4 plus 1 5, 5.6/3. ठीक है, so I'm going to show you ये calculation I'm doing and showing you ताकि simplest way में you can do this calculation. अब substitute कर देते हैं. pi is 22/7, radius is 1.4 into 1.4 into ये bracket 6.6 plus 5.6. This will give me how much? 6 plus 6 is 12 and 6 plus 6 again 12/3. ठीक है, I hope it's clear till here. इसके बाद आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. यस, तो इसको व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट वॉल्यूम इक्वल टू 7 2s are 14, 0.2 आ गया. अब 3 तो 2 3 4 5 ये किसी से कैंसिल नहीं होगा. 22 into 0.2 आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट. 22 2s are 44, तो ये हो जाएगा 4.4 multiply by 1.4 multiply by 12.2. ये जब हम करेंगे तो what will we get? हाँ, one more, divide by 3 भी है. So this will give me the volume of 1 gulab jamun. Okay, volume of 1 gulab jamun. Now I want to find, इसको मैं आगे नहीं करूंगी solve because this is not my final answer anyways. So let us find 30% of this volume will be how much? 30% of this volume will be equal to, yani volume of 1 gulab jamun. This will be equal to 30% means 30/100 into, then this 4.4 into 1.4 into 12.2/3. Okay, ये जो पूरा वॉल्यूम मिला था. Now एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल यहाँ पे. And what you can do, ये सारे decimals हटा दो because decimal is a little complicated thing to calculate. यहाँ पे मैंने कितने 1 2 और 3
यानी कि upon 1000 I'll have to write. So नीचे already 110 is there and this 1000 I'm going to write. Clear? So this way you will do your calculation, and now I'm going to keep this as it is. Okay, volume 30% मुझे मिल गया. 30% is this much. This is for 1 गुलाब जामुन. इतनी सिरप है 1 गुलाब जामुन में. अब मुझे फाइंड करनी है सिरप इन हाउ मच 45 सच गुलाब जामुन. तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे अब 45 से, एंड दैट विल बी अ फाइनल कैलकुलेशन. तो आफ्टर दैट हम सारी कैंसिलेशन कर देंगे. सो इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन की सिरप कितनी होगी? 45 इंटू दिस होल नंबर, 45 into 44 into 14 into 122 upon 10 into 1000. So you can calculate here. यहाँ पे या तो डायरेक्टली ये सब मल्टीप्लाई कर दो और फिर डेसिमल डाल दो. Else you can see यहाँ पे कुछ अगर 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 1s are 2, 2 7s are 14. So I'm left with 9. Okay, 9 into 7 is 56. Let's write 56. 56 into 44 into 122 upon 1000. Okay. तो एक्चुअली यू कैन कैंसिल दिस 1000 ऑल्सो, लेकिन आप नोटिस करोगे इसको भी हमने अगर कैंसिल किया तो बाद में हमको डिनोमिनेटर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर एक बच जाएगा जो डिवीजन आई डोंट वांट टू डू. आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दीज 3 नंबर्स एंड दिस मच कैलकुलेशन यू हैव टू डू इन दिस सम. ये थोड़ी सी एक बिग कैलकुलेशन है. इवन इफ यू डू बाय एनी अदर मेथड ऑल्सो तो भी यू विल हैव टू डू मच मोर कैलकुलेशन देन दिस आई फील. ओके, क्योंकि मैंने भी ट्राई किए हैं और भी 2-3 मेथड. तो दिस वाज द सिंपलेस्ट वन which you can follow according to me. If you have a simpler one तो let me know. तो ये तीनों नंबर जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो you get 338184, 338184 divided by 1000. So let me tell you, ये वाला भी मैंने कैंसिल किया था. Okay, this if you further cancel ना, finally you will be left with what? 9 into 11 into 7 into 61 upon 5 into 25. ये तो फाइनली बच ही जाएगा और उसके बाद आप फर्दर कैंसिल नहीं कर पाओगे. So then rather than dividing this with 75, I mean 125, that will be even more tedious. फिर आप multiply and divide by 8 करोगे ताकि आपको 1000 मिल जाए. तो finally you come back to this number. ठीक है, that's why I've written it like this. 1000 को मैंने नहीं solve किया. But you can further keep on trying. So this is what we will get, and इसको तो लिखना easy है because the denominator is 1000. That's why I can easily write this as 1 2 3 338.184, 338.184, and this is unit is cubic centimeter. Okay, so this is my answer for the final answer. How much syrup will be found? तो ये 45 गुलाब जामुन में I will find syrup which is equal to 338.184 cubic centimeter. Okay, so as I told you, see there was a lot of calculation in this sum, and you have to also remember the 3 steps. पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, उसके बाद 30% ऑफ दैट वॉल्यूम, और उसके बाद 45 गुलाब जामुन के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 45 for that. So do these 3 steps and use your own easiest way of calculation. No harm in that. But if you don't find any other easy method, ये वाला कर लो, ये easiest है according to me. Okay, so I think we will end the session, today's session here. आगे के जो numericals हैं 13.2 के, we will continue them in the part 2, which we will do in the next class. Okay, so thank you for watching, and if you have understood the sums clearly, don't forget to like the video and also share the link with your friends. And I'll meet you in the next session for class 9. The daily live sessions हैं 2 p.m. and 3 p.m. for class 10. Okay, so take good care of yourself and have a good day.